आज हम इस वीडियो में कोई एजुकेशन वीडियो की आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम उस सक्सेसफुल स्टोरी की आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जुलाई 2022 में आज हमें काफी बड़ा अचीवमेंट एग्जैक्टली मिला है। और कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स जो टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में सिलेक्ट हुए हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉप कंसल्टिंग फर्म इज कैन रिसर्च, जहां पर आप लोग सर्च कर सकते हैं कि पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। एंड जहां पर एक चैलेंज होता है, एक एक वीक के राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, तब जाकर के इट्स वेरी चैलेंजिंग टू क्रैक बिकॉज यहाँ पर जो हायरिंग्स भी होती हैं, वन ऑफ द टॉप बी स्कूल स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट सेलेक्टेड into such high profile brands, into such high top notch consulting firms where आज बहुत बड़ा एक successful achievement day है अपने लिए, जहां पर कुछ हमने young talent को वहां पर just right away after their graduation आज हमने उनको अपने इस professional certifications के बदौलत पे आज हमने उनको वहां पर place करा है। जहां पर आज उनके इंटरव्यूज में कैसे उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, क्या उनको हेल्प आउट किया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या थे और क्या क्या उनको क्लियर करना पड़ा, एंड उसके साथ किस तरीके के एनुअल रिपोर्ट्स राउंड आए, फिर क्या एप्टीट्यूड राउंड्स आया, क्या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के राउंड्स पूछे गए, एंड कैसे ये सारा कुछ उनकी जर्नी में सपोर्ट किया इस ग्रैंड लर्निंग सर्टिफिकेशंस में, जिसके बारे में मैं आप सबसे काफी टाइम से बोलती आ रही हूं कि ये सर्टिफिकेशन इज चेंजिंग लाइफ्स ऑफ मेनी 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 ग्रेजुएट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो प्लीज डू लिसन एंड राइट अवे आज हम जा रहे हैं स्ट्रेट अवे लाइव उस इंटरव्यू में, जो कि हमारी काउंसलिंग टीम ने और उनसे एक लाइव इंटरेक्शन के वाया जानना चाहा कि कैसे एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उनकी लाइफ में। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स जहां पर उनका प्लेसमेंट हुआ, किस प्रोफाइल पे हुआ, क्या टास्क था, क्या इंडस्ट्री रिसर्चेस था, सब कुछ आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हाय, वेलकम राहुल, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड विद वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स वेयर आज इन ब्रांच में पहुंचना ही बिगेस्ट चैलेंज है फॉर MBAs एंड ऑफ कोर्स ग्रेजुएट्स आल्सो without these top respected professional certifications. So let's start with the interview. Now it's your day. So first of all, Rahul, just share your journey when you had started learning with Magnum Educorporates, and also tell about getting a specialization in 3 big sectors like stock market, financial market, and of course market research. So what do you want to say? So first of all, I want to say thanks to the entire Magnum team. Because of this team, I get this job in such a good company. So I started my journey with Magnum in February. I got it from some website that there's an institution that provides certificates in job training. So we started with technical analysis part of the stock training, and which really helped us to learn the new techniques which as a beginner we have not covered yet. After that, Prabjot ma'am was our guidance, our mentor at that time. Then she started with the financial analysis part too, the fundamental analysis, in which again we started to analyzing the financial reports, and that part really helped me in my interview too. When sir asked about me that can you read the financial reports, which we had done in our past with Prabjot ma'am, so it really helped us a lot. And then we started with the market research classes, in which we were taught how to conduct the primary, secondary researches and qualitative, quantitative researches, how to draft the emails and these and guest estimates question that we were asked. So and that's really helps a lot in during the interview part. And then the whole HR team and Prabjot ma'am and everyone getting ourselves shortlisted for such companies, arranging the interviews and creating a good environment so we don't get nervous, and always motivating us and boosting our confidence, which really helped us a lot during the interview. And I mean, it was my first interview. Like in my life also, I have not given an interview for a job. So with Magnum, it was my first interview, and I cracked my first interview itself. So I think it's a very great achievement for me. Finally, I just move on the second question. How's your experience about trainers and class over here? What do you feel here? So with Prabjot man, we were with them for like 3 months, from Feb, March, and April, and yes, till May too also.
and she was very kind. Our class used to be very interactive, not very much like a. There was like 25, 30 batches of class, and ma'am used to encourage us to speak more and speak more, to ask questions. It was not just a class that you find in random coachings where teachers is talking and students are listening or taking the notes. We used to interact a lot about in that class, and that's where I think it helped us to understand in a different manner. We could apply that knowledge, and ma'am also conducted live session on the stock markets, which again really boosted our confidence, and we can apply the practical knowledge there too. And while when the fundamental classes started, again ma'am used to take the financial reports of some companies to let us understand. She was not just getting us understand the technical terms. She used to take the examples, real life example, how to research a report, how to conduct a how to read a financial statement. And then our second mentor was our HR sir, who conducted the market research classes. Again, he was very fantastic. He used to give us a chance in the class to speak up. He used to arrange group discussions. He used to ask us to speak more and more. He used to take many activities which can enhance your soft skills like communications, confidence, motivation, which again is a really necessary for anyone to succeed in any kind of field, whether Yes, it's yes. market research, finance, sales, any research. If you want to become an IAS officer, also you should have these skills, Yes, communication skills. definitely. Interpersonal skills are very much like boost Yes. your confidence and everything. So that's the biggest thing you have said right So now. these skills not only help you in the particular field, but on a general level in your life at every field. So sir boosted that, and he used to be like, you should be punctual to our time to timings. So he was a great mentor too. Now you just tell about the commitments which like Magnum make on the guaranteed placement on the top, like in the top global consulting firms, top brokerage houses, or global MNCs with the high salary packages. So, what do you want to say about this commitment? Like, what do you want to say? So when I joined Magnum, that time Prabjot ma'am was mentoring us. She told us that if you work hard in there, we will give you the best company we can give. If you just work hard in a with dedication, if you are confident enough, we will make you the we will give you the best company we have. And that's the commitment she made during the before the starting the course, and she fulfilled it. The Magnum team fulfilled the whole commitment. We started with this stock markets courses, then we moved to technical terms, fundamental terms, with market research. So the commitment was very done. Yeah, definitely, because we are providing the commitments to the all Yes. like participants. But sometimes ना कि like people have fear कि मैं place होऊंगा या नहीं होऊंगा क्योंकि because हम तो उनको दे रहे हैं confirmation. So आपको like क्या feel हुआ था जब आपने यहाँ पे commitments आपको दिए गए थे but मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक होता है ना कि हाँ मैं कर रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि जैसे जनरली होता है लोगों के तो आपको Nervousness, क्या लग it रहा was a था? part of the journey. Yeah, nervousness was a part of the journey. Sometimes we Yes. used to get nervous, but again, Prabjot ma'am and the HR, the management sir, used to give the motivation to us, because if they say like, if you're doing well, nervousness was part of the journey, but if you're doing well, you can just be within the right path, have some confidence in yourself, and you will get through the interview process and everything. The biggest thing I think was in interview was to be very confident. Hmm. If you're confident, the environment will be cool and around. Yes, If you yes. start panicking in the first second, then how much cool is the interviewer and anything, you will not work out in that interview. And that's the thing was very good in our classes, because ma'am and sir used to tell us to speak more, because speaking more in the classes makes you confident enough Yes, to interact with definitely. 25 people, 30 people. And then sir also used to take the presentations, like PPT, email drafting. Before like starting my job, if I've done like PPT, MS Word, so I'm like confident enough that I can survive in this corporate world. Great. So Yes. now I just want to know one more thing from you. Like,
Yes, ma'am. Tell about the skills what you have learned here during your 4 months training. So how engaging and like interacting along with the like trainers support. So like how would you find here कि like 4 months जो आपका training ये चलता रहा पूरा, so कितना आपके लिए ये मतलब engaging था, interacting था, आप कितना evolve हो पा रहे थे? Just tell about this. सो द जो स्किल्स हम लोगों ने मैम इन सब में सीखी थी, द स्किल्स, सो एक तो इंटरपर्सनल स्किल्स थी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया आपका, Yes. टीम ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड, टीम वर्क था क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, तो साथ में अलग बैचेस हुए बट सब साथ में थे, ग्रुप डिस्कशन से हम लोग का टीम का हर चीज़ हुई, तो ये सब एक इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमें बिल्डअप होती गई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इटसेल्फ. Now we go some other skills that we build up technical skills, how to just know the how the share price is going up and down using different approaches, indicators. Then we can the skills that to read a financial annual statement by using the ratios method, by analyzing the ratio, knowing the formula, everything. You can just quickly in the 5 to 10 minutes. Before Magnum, I used to take like 1 to 2 hours to just read a financial statement because we were not knowing the secret ratios that we can apply to there. But after that, we can just I'm just in a state to just read the statement just 10 to 15 minutes. So that is again a skill to read a financial statement. And in my interview also, when I was interviewing the senior management consultant, he told me that if you are very good with reading the financial annual statements, it will be very helpful in your job too. And ma'am also used to teach us on MS Excel, which again, MS is a very great part of any industry. If you go in like investment banking too or in market research, Excel plays a very important role. That's again a skill that we used to learn. Presentation skills we get to learn, and the most important skill that I learned, which I've never learned in my college time or school time, was how to conduct a market research Okay. by using different methods like primary research, secondary research, qualitative and quantitative. So that plays a very major role, and that skill, what I've learned, a new skill which I've discovered. Great. Yes, ma'am. And now we are coming on the last question, and Yes, then ma'am. we will wind up after this question. So I just want to ask you finally, like, uh, as you like finally got selected in the consulting firm, like you have now selected in Ken Research, right? So how's your like feeling being an analyst? Because this is the dream of every B school student. Like, what you are So, feeling ma'am, like being an analyst. What your perspective? so right now I'm feeling that I have an upper advantage. Like before doing my MBA, I got a job that many B schools people go to their job. As I've researched that many people doing MBA from like different universities Mm-hmm. get a job in the Ken research. So I think I may have an upper advantage from them that before doing MBA, I started my career in consulting firm, which I was because consulting career is a very vast career. There's lots of good opportunities and ample of opportunities are there. Mm-hmm. So and I did just graduation last year and got a consulting firm in just 1 year. And I have also 1 year gap in my resume, but it was not affected by that the job. And so right now I'm feeling very like excited because consulting career requires you to be detail oriented, face up the new Yes, challenges yes. every day. So yeah, I'm really excited for that. आपने जो अचीवमेंट की मतलब अभी लिया है दैट इज ऑफ कोर्स आपके लिए तो बहुत ज्यादा सक्सेस की बात है और ऑफ कोर्स ये हम लोगों के लिए भी बहुत सक्सेस की बात है और ऐसी ही सक्सेस लाइक जो हिस्ट्रीज है वो हम लोग बनाते रहेंगे सो वेरी Sure, ma'am. लाइक वंस अगेन आई जस्ट कंग्रेचुलेट अ वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू Thank you. नाइस मीटिंग टू यू राहुल Same थैंक to यू you, सो ma'am. मच थैंक यू सो Thank मच So, welcome Abhishek. First of all, very congratulations to you for getting selected with one of the top consulting firm जहाँ पे आप जैसे MBAs के लिए और ग्रेजुएशन लेवल की ऑडियंसेस के लिए पहुंचना बहुत ही मतलब एक बिगेस्ट चैलेंज है. So, without these top professional certifications. So first of all, I just want to know कि आप share करो कि you share your journey when you had started learning
with Magnum Educorporates, and also tell about getting a specialization here. First of all, thank you to all Magnum team, and without them, this is not possible for me to really reach over there. Such a without your guidance, I'm not able to crack that interview. This is the reality. Uh, First of all, I will share about my journey that starts with when I'm searching that where should I go for any stock market research, or as well as how to I मीन्स ये था मेरा कि मैं कैसे सीखूं कि कहाँ पर मुझे प्रॉपर मीन्स ये मेरा कहना था कि जब मैंने स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट सर्च करने के लिए कि मैं क्या कहाँ ऐसा एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। मार्केट में आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ आपको सेम पैटर्न वो आपको पढ़ाएंगे, बट आपको लाइव मार्केट में दे आर नॉट गोइंग टू हैंडल आपको वो चीज नहीं प्रोवाइड करेंगे कि लाइव मार्केट में आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। वो चीजें मैग्नम में मुझे मिली, ठीक है। और पहले क्या था कि लास्ट की जब मैं 5-6 महीने अपने आप को पहले देखता हूँ और अभी देखता हूँ, तो ये तो है कि मुझे स्टॉक मार्केट में जो भी मैं डिसीजन मेकिंग है वो 90% तक करेक्ट जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, हाँ एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा है, प्लस एक ये हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। देन हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर, जो हमने सर्टिफिकेशन में रिसर्च पोर्शन है जो हमारा फाइनेंशियल एज वेल एज हमारा मार्केट रिसर्च। फाइनेंशियल एनालिस्ट में जो भी हमने एनालिसिस में जो भी टूल्स पढ़े, जो हमारे कैश एनालिसिस हो चाहे रेशियोज हो चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक बैलेंस शीट को समझना हो गया, ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं हमारे बूस्ट करती हैं। इवन हमारे एमबीए पोर्शन में भी ये चीजें हैं, लेकिन मैम को एक स्पेशल अटेंशन हर स्टूडेंट्स का क्या पोटेंशियल है, उसका क्या वीकनेस है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, उस अकॉर्डिंग मैम अपने जो भी अप्रोच है या जो डिलीवरी है टर्म्स की वो उस हिसाब से डिजाइन उन्होंने किया है कि हर एक बच्चे को चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो ये चीजें मैग्नम ने मुझे दी, और थ्रू आउट द मीन्स जर्नी ये है कि आपको जो भी डाउट हो आप कभी भी, मतलब ये तो है कि आपको कहीं ना कहीं वो प्रोएक्टिवली आपको सपोर्ट करते हैं कि आप उस चीज को समझो, नहीं समझ में तो अपने से ही वो लोग इनिशिएट करते हैं मैम कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जर्नी तो थ्रू आउट मेरी काफी अच्छी रही। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेनर्स एंड क्लासेस ओवर हियर। मैम ट्रेनिंग और क्लासेस के बारे में तो ये है, जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो मुझे अभी भी याद है मैम ने बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था स्टॉक मार्केट का। एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हमने बुक्स में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन जब आप आते हो प्रैक्टिकल मार्केट में दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उन्होंने एकदम बेसिक जार्गन से स्टार्ट किया, देन वो अपना हमारे प्राइस सेक्शन पे आए, फिर टेक्निकल एनालिसिस हमें सिखाया उन्होंने, देन फंडामेंटल्स, देन टूल्स को यूज करना, एंड देन उनका अप्लाई करना इन अ प्रैक्टिकल मार्केट में। उसके बाद देन हमारा वही फाइनेंशियल एंड मार्केट रिसर्च की क्लासेस हुई। उसके बाद हमें एक मेंटरशिप मिली एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, थ्रू आउट आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करोगे, कूल एंड कंपोज रहना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये सब चीजें काफी हेल्प की मुझे ये सब चीजों को क्रैक करने के लिए। Okay, so my next question is tell about the commitments which we make on the guaranteed placement in top global MNCs company or top brokerage houses, top global consulting firms with high salary packages. So इस पे आप क्या कहोगे? Even this is the reality. Even after doing MBA and the most of the tier 2 tier 3 colleges, it is not possible to get placed as soon as means जैसे कि मैंने अभी आप सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया, विद इन 10 to 15 days आई गॉट प्लेस्ड। ओके, तो ये चीजें आपको बहुत ही मीन्स अगर आप टॉप भी स्कूल से हो तब तो ठीक है, ड्यूरिंग आप फोर्थ सेमेस्टर या प्लेस हो जाते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको इतनी जल्दी, और वो भी एक रेपुटेड रिनाउंड जगह पे आपको प्लेसमेंट मिले। तो ये चीजें, ये तो कमिटमेंट आपने पूरा किया थ्रू आउट द जर्नी। ये भी चीज काफी प्रोएक्टिवली सपोर्ट था पूरी टीम का। इवन जो हमारी मेंटरशिप हो, हमारी स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगा नाम, निसर्ग सर हो गए, चाहे हमारी मेंटर मैम हो गई प्रभजोत मैम, इनका ये था कि आपको इंटरव्यू के हर राउंड के बीच में आपको क्या चीजों पे ध्यान देना है, किस पोर्शन पे आपको काम करना है। तो ये तो था कि कमिटमेंट तो था थ्रू आउट, सपोर्ट तो थ्रू आउट था, अपने उसने अपना कमिटमेंट भी पूरा किया। Tell about the skills what you have learned here during 4 months, uh, uh, 4 month training, and how engaging and interacting along with the trainers
support? First of all, I am able to earn on my own through stock market. तो ये तो कहीं ना कहीं एक ठीक है, हम जॉब करते हैं, डेट इज डिफरेंट। एक हमारे पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पहली बात तो आज की डेट में बहुत जरूरी है। एंड दूसरी चीज क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो हुआ मतलब यहाँ करके, और थर्ड चीज कि पूरे पैकेज में जो मुझे नॉलेज मिली, दैट इज रियली अप्रिशिएटेबल बाय मी फॉर द मैम। रियली उन्होंने काफी चीजें मतलब मेरे ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि लास्ट के 4 मंथ अभी देखता हूँ तो काफी मेरे में नॉलेज की प्रोस्पेक्टिव से बोले चाहे कॉन्फिडेंस के प्रोस्पेक्टिव से काफी इम्प्रूवमेंट है। So finally, you got selected in top consulting firm, Kane Research. So how's your feeling being an analyst, which is also the dream of top B schools student? Really it's good. I not hope that I will be selected as soon मतलब मीन्स ये मान के चलिए आपकी 3 to 4 राउंड्स हुए, so I am able to easily crack that those interviews. बट ये तो रियलाइज हुआ कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती तो मुझे अप्रोच क्या होना चाहिए तो वो मुझे नहीं मिल पाता। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आल्सो थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड टू मैग्नम टीम। ओके, सो आप मतलब दूसरे जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज थ्रो करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर दो चीजें हैं, एक तो आपको अगर नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज अपार्ट फ्रॉम बुक्स, देन आपको मैग्नम ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड वन, अगर आप रिसर्च फील्ड में इन सेंस फाइनेंशियल रिसर्च हो, टेक्निकल हो, एज वेल मार्केट रिसर्च हो, अगर आप जॉब कहीं सीख कर ढूंढ रहे हो तो आपको बेटर गाइडेंस मैग्नम से ही मिलेगी। और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बस नहीं कहना चाहता। ओके, सो अभिषेक, हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशंस को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ओके, नाउ थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।